There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We are going to come back and we are going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. done. Well done. हम लोग थोड़ा राहुल जी. देखिए, हमें लगता है यह कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, ठीक से इस पर बहस नहीं हुई, विचार नहीं हुआ, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। एथिक्स कमेटी के बारे में ऐसा सुनने में आया कि जो लोग भी अंदर थे, कुछ लोगों ने ये बात बाहर आकर कही कि जिस तरह से सवाल जवाब किया गया वो एक माननीय सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं था, एक महिला के लिए खास तौर पर। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में देश जा रहा है। और पैसा लिया ऐसा आरोप लगाया जरूर गया है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ अभी तक।
साबित होना चाहिए था ना। किसी भी कहीं भी आप किसी पर आरोप सिर्फ लगा दे तो उसको आप क्राइम नहीं मान सकते हैं। सबूत मिला नहीं, जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भी ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा कि जिसके आधार पर आपको लगे कि हाँ किया है उसने ऐसा। दूसरी बात कि आईपी एड्रेस या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह की बात है पार्लियामेंट के इसके पोर्टल के, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये आप किसे दे सकते हैं किसे नहीं दे सकते हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे माननीय सांसद हैं जो सबको देते हैं, और वहाँ से लोग, क्योंकि देखिए हर मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और ख़ास तौर पर जिन्हें पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो वो तो किसी ना किसी को पासवर्ड देते ही हैं, OTP देते ही हैं, और वो कराते हैं। आप सबकी जाँच कीजिए। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आप क्यों दुबई या फिर कहीं भी अरब कंट्री में बैठ के कहीं भी बैठ के वो करा रहे हों। इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ने नहीं किया है, सिर्फ उसी ने किया है। तो आप सबकी जांच कीजिए, उसके बाद अगर और लोगों का मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पता नहीं क्या किया, और तुरंत उसको इस तरह से सदस्यता रद्द करना, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की ही साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी, तो इसके चलते जितने भी जो लोग भी बोलते थे, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के, उन्हें एक एक करके खामोश करने का ये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी लोग महुआ मोइत्रा के साथ हैं, और बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। वो डबल वोट से जीत कर आएंगी और फिर अपनी आवाज़ को बुलंद रखेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पार्टी की उनके साथ हैं। धन्यवाद। We have found a history to happen in the new Parliament House. This is a history which has been created by the central government and more particularly the members of the Parliament. What we have seen today, we have seen that the Parliament, by raising only their voices, have actually expelled a woman, single woman MP, Mahua Moitra. So, how they are actually, how they are atrocious, their atrocity against women, this is writ large on the face of what steps they are taking against women. So this is another example of that. I was just wondering that a 495-page report, actually the report consists of 495 pages. So how could it be placed on the table today, and how a discussion could be held on that 495 pages report on the same day, and then the steps to be taken was also on the same day? This speaks in Gallode the fact that this was a preconceived incident which was to occur. Ye to hona hi tha. Therefore, this has happened. So there we say, have you taken into consideration the affidavit which has been said to be given by Hiranandani or any other individual? If you have taken that into consideration in coming to your conclusion about the recommendation, have Hiranandani been called? Has Hiranandani been called to depose, or has Mahua been given the opportunity to cross-examine Hiranandani or any other individual whose report you have taken to be the basis which we find from the media reports? So the Parliament has not considered this aspect also. This is where our leaders of in the Parliament, our MPs in the Parliament, they had joined issues there, and our Parliament leader, Honorable Sudip Bandyopadhyay, had also spoken about that. Our Member of Parliament, Kalyan Bandyopadhyay, had also spoken about the legal issues. So these things have not. मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द
प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को इस मानने की भी कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए आप बोलिए मत? आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी।